Hello and welcome back to my channel. My name is Ayushi. Today we shall be discussing chapter 14 Factorization from class 8 Mathematics. What is factorization? Factorization is the process of writing any number or expression as the product of its factor. That is, हम किसी भी नंबर या किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर एक्सपैंड करके उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. xy can be written as 2 into x into y. 14x square y can be written as 14 into x into y. X square means x has to be multiplied 2 times. Similarly, 24xy can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into x into y. Okay. Similarly, 16x square y square can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into x into y into y. Okay, why are we writing x double times and y also double times? Because the power here is 2. X is also raised to the power 2 and y is also raised to the power 2. That means while we are expanding it, x would come twice and y will also come twice. So this is how we expand any given number or expression into its factors. Next we shall see how do we find the common factors among the given terms. First of all, let us consider monomials. First example is 3xy, 9x square y, 27xy square. As we can see, 3xy, 9x square y, 27xy square, all of these are monomials. So let's proceed. 3xy can be written as 3 into x into y. 9x square y can be written as 3 into 3 into x into y. And similarly, 27xy square can be written as 3 into 3 into 3 into x into y. Okay. Now, we have to see what is common among the three expressions. 3 is common. X is also appearing in all the three expansions. So, we have x also as common. Y is also there in 3xy, 9x square y, 27xyz. So, here we see 3xy is the common factor among all the three monomials. Let's take another example. 24xyz 12xy 6x square. We can write 24xyz as 2 into 2 into 2 into 3 into x into y into z. Similarly, 12xy can be written as 2 into 2 into 3 into x into y. And 6x square y can be written as 2 into 3 into x into x. Okay, now we have to find what is common among these three. See, 2 is everywhere, so 2 is common. Next, we can see 3 is also appearing in all the three expansions, so 3 is also common. So here we can write 3 also. Then x is also appearing in all the three expressions, so x is also common. Therefore, 2 into 3 into x, that is 6x, is our common factor among the three given monomials. Now what is next? Now we will find the common factor among the given binomials, trinomials, etc. What is binomial or trinomial? Any expression consisting of more than one term is known as a binomial. More than two terms is known as a trinomial, and so on. We have the given expression 2xy plus 12x square y. From here, from 2 and 12, 2 can be written as common
and xy is appearing in the first term also and second term also, so xy can also be taken as common. When we are taking 2xy outside the bracket, inside the bracket we are left with 1 plus 6x. So this will be our answer. Let's take another example. 7x cube plus 14y cube. Here 7 and 14, 7 is common. If we are taking 7 outside, inside the bracket we are left with x cube and 2y cube. Why 2? Because 7 2s is 14. That's why 2 is left inside the bracket. Third example, 5x square plus 15xy plus 25y square. Here we can see 5 is common among all the three. So 5 can be taken outside the bracket. Inside we are left with x square plus xy plus 5y square. We have one more example. 14xy plus 7x square plus 6y square plus 3xy. See, among 14xy and 7x square, we can take 7x common and inside we'll be left with 2y plus x. Similarly, out of 6y square and 3xy, 3y is common. Inside the bracket we'll be left with 2y plus x. Again, see, 2y plus x is here also and it is in the first term also. So 2y plus x can also be taken out as common and then we'll be left with 7x plus 3y. So this will be our factorization. Next up we have factorization using the identities. First question, x square plus 8x plus 16. Here as you can see, last term and first term are perfect squares. So we can split the middle term into two halves. 8x, half of 8x will be 4x and 4x. So x square plus 4x plus 4x plus 16. Now we can divide them into two groups. Out of the first group x is common and inside we are left with x plus 4. Similarly, in the next one we have 4 common and inside we have x plus 4. Now x plus 4 and x plus 4 is common. So again we'll be reaching this answer, x plus 4 whole square. Let's consider one more example. Let's consider one more example. X square minus 18x plus 81. Here again the first term and the last term are perfect squares. So we can use the identity and we can divide the middle term into two equal halves, minus 9x and minus 9x. Keeping the first term as it is and the last term also as it is. We can form two groups and we can take common x into x minus 9 into x minus 9. We have x minus 9 again common. So this becomes the identity for x minus 9 whole square. Considering one more example, x square minus 14x plus 49. Again, first term and last term are perfect squares. So splitting the middle term into two equal halves, minus 7x and minus 7x. Keeping the first term and the last term as it is. Again forming groups of 2, taking x common, inside the bracket we have x minus 7, taking minus 7 common, inside the bracket we have x minus 7 again. So this becomes the identity for x minus 7 whole square. Next method of factorization is middle term splitting. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई देते हैं. मोस्टली जब लास्ट टर्म हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई देगा तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, इस मेथड में हमें मिडिल वाली टर्म, दैट इज़ बीच में जो टर्म आ रही है, उसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना है. दो हिस्सों में कैसे स्प्लिट करेंगे? लेट्स वॉच विद एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल वी हैव इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. यहाँ पे देखिए मिडिल में टर्म है 8x, लास्ट टर्म है 15 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो
अब हमें क्या करना है, हमें 8x को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देना है। अब वो हिस्से कैसे बनेंगे वो हमें पता चलेगा हमारी लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म है 15, दैट मीन्स हमें 15 के फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस करने पर 8 आ जाए। 15 के फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर 8 आ जाए। वाई एडिंग? बिकॉज 15 के आगे प्लस का सिंबल लगा है। अगर यहाँ माइनस का सिंबल होता तो हम ऐसे फैक्टर्स सेलेक्ट करते जिसको माइनस करने पे 8 आता। नाउ बिकॉज यहाँ पे प्लस लगा है, दैट मीन्स फॉर नाउ वी नीड द फैक्टर्स ऑफ 15 हुज सम इज 8। 15 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 15 के फैक्टर्स हैं 3 एंड 5 एंड वी नो 3 + 5 इज़ 8। दिस मीन्स हम 8x को दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं और हमारे दो हिस्से होंगे 3x एंड 5x। 8x को हमने लिख दिया 3x + 5x। अब हमें यहाँ से चार टर्म्स मिल गई जिसमें हम दो दो के ग्रुप्स बना सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज x² + 3x and the second one is 5x + 15. Okay, so now what do we have to do? ये पहले ग्रुप से x कॉमन दिख रहा है, x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और पीछे रह जाएगा x + 3। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में 5 कॉमन है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर we'll be left with x + 3. Here also we have x + 3, here also we have x + 3. So again taking x + 3 common and in the other bracket we are left with x + 5. तो ये हो गया हमारी given expression का factorization using the middle term splitting. Let's consider one more example. x² + 2x - 15. इन दिस केस हमें 15 के फैक्टर्स चाहिए जिन्हें माइनस करने पे +2 आ जाए। 15 के फैक्टर्स दोबारा से है हमारे पास 3 एंड 5, इसे माइनस करने पे हमें मिलता है +2। सो मिडिल टर्म 2x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5x - 3x एंड हियर वी हैव -15। दो के ग्रुप्स बना लिए। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन है, we will be left with x + 5 in the bracket. नेक्स्ट में -3 कॉमन है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में x + 5 आ गया। ये जो दो ब्रैकेट्स हमारे पास बनते हैं ये हमेशा सेम बनने चाहिए। अगर ये सेम नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स हमने फैक्टर्स चूज़ करने में कुछ गड़बड़ किया है। ओके, सो x + 5 को कॉमन ले लिया एंड वी आर लेफ्ट विद x - 3. सो दिस इज़ आवर आंसर। आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, जो इनिशियल एक्सप्रेशन है वही दोबारा से मिल जाएगा आपको। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर मोर क्लैरिटी। x² - 7x + 12। यहाँ पे हमें चाहिए 12 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे आ जाए -7। हमें पता है 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 एंड 4। वी कैन कंसिडर द फैक्टर्स 3 एंड 4। 3 एंड 4 को ऐड करने पे हमें 7 मिलता है, पर हमें चाहिए -7, सो वी कैन टेक -3 एंड -4. सो हियर वी हैव x² - 3x - 4x + 12. फर्स्ट ग्रुप से हम x कॉमन ले सकते हैं, हियर विल बी लेफ्ट विद x - 3. सेकेंड ग्रुप से -4 कॉमन आ रहा है। Okay, so -4 into x will give us -4x and -4 into -3 will be +12. So bracket के अंदर will be left with x - 3. यहाँ पर भी x - 3, यहाँ पर भी x - 3, that means x - 3 हम कॉमन ले सकते हैं and we'll be left with x - 4 in the other bracket. So this is the answer for our expression.